Hey guys, welcome back to my channel. My name is Aniket and I'm back with another fresh informative video. Today I'll be discussing about the types of essays that you can expect in your IELTS writing task 2. IELTS writing is the toughest and task 2 का weightage और भी ज़्यादा रहता है. So knowing the types is very important. In this video I'll be covering all the question types along with the format and examples that you can expect in your IELTS writing task 2. तो video को पूरा देखना. Knowing the types is super important because if you really don't know the what are the types, you can't really figure out the how to solve them. Alright? So video को पूरा देखना, channel को subscribe कर दो, video को like कर दो, and without any further bullshit, let's jump into the video. Alright, so there are just 5 types of IELTS writing essays that you can expect in your IELTS writing task 2, and let me tell you, this is same for both general training and academic writing. The only basic difference between general training GT and academic writing is that the task 1 is different. In general training, the task 1 is a formal letter, and in academic writing, the task 1 is a chart type question where you have to form a report based on that particular chart or table or graph that is given in your particular question. That's the basic difference, but task 2 is same for both GT and academic writing, that is an essay, and there is just 5 types of essays, nothing more than that. And now we'll be discussing about the exact 5 types, the question types, the format with examples in the next phase of this video. The first type of essay is IELTS opinion essay. This is the most popular type and ये almost सभी एग्जाम में आता है. This type of essay is where you are presented with someone else's opinion and you are asked if you agree or disagree with that person's opinion. Simple. आपको एक opinion दिया जाएगा question में. Often it's extreme. बहुत weird type का opinion होगा, extreme opinion होगा, and you have to say why you agree or why you disagree with that person's opinion. पूरा ऐसे उसी के बारे में होगा. तो question बहुत type से आपको पूछा जा सकता है. The first type is एक question दिया रहेगा, एक statement दिया रहेगा, and you will be asked to what extent do you agree. या फिर वो लोग पूछेंगे डू यू अग्री, सिंपल डू यू अग्री, या फिर डू यू अग्री और डिसअग्री. एंड लास्ट टाइप इज व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस स्टेटमेंट दिया रहेगा, एंड उसके बाद इन 4 लाइन में से कोई एक लाइन दिया रहेगा. दीज आर द टाइप्स बाय विच दे आस्क यू द क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर एसे टाइप. दीज आर नोन एज ओपिनियन एसे. नाउ एक स्क्रीन में आपको एग्जांपल दिख जाएगा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ. सम पीपल थिंक दैट ओनली इलेक्ट्रिक कार्स शुड बी अलाउड ऑन द रोड बाय 2040. डू यू अग्री. सिंपल पूछ रहे हैं डू यू अग्री, एंड आपको अपना ओपिनियन बताना है. इफ यू डिसअग्री, यू हैव टू राइट योर डिसअग्री स्टेटमेंट, पूरा आपको पर्सपेक्टिव देना, एंड ऑल्सो स्टेट क्लियर व्हाई यू डिसअग्री विद दिस ओपिनियन. सेकंड टाइप ऑफ IELTS essay is IELTS discussion essay. This type of essay presents you with a statement and you must present 2 sides of it. This might be 2 sides of the same issue या फिर this might be 2 opposite sides of the same issue. आप support में ही बता सकते हो, opposition में ही बता सकते हो, contrast and support दोनों mention करना है. And let me tell you a question type. स्क्रीन में आपको दिख जाएगा. Some people think there should be free healthcare for all people but others disagree. Discuss both sides. आपको दोनों साइड बताना है अपने बॉडी पैराग्राफ में. बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में सपोर्ट बताना है एंड बॉडी पैराग्राफ नंबर 2 में आपको कॉन्ट्रास्ट में बताना है, ऑपोजिंग पर्सपेक्टिव्स भी बताना है. या फिर द क्वेश्चन कैन बी सम पीपल थिंक दैट अर्बन स्पेसेस शुड बी यूज्ड फॉर पार्क्स रादर देन फॉर हाउसिंग. डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन. बॉडी पैराग्राफ नंबर 1 में आपको सपोर्ट में बताना है, नंबर 2 में कॉन्ट्रास्ट में बताना है, थर्ड में आपको अपना पर्सनल ओपिनियन देना है. दैट इज द क्वेश्चन टाइप, एंड आपको ऐसे में ये 3 चीज मेंशन करना है. दिस इज एवरीथिंग फॉर IELTS डिस्कशन ऐसे. दिस इज द टाइप नंबर 2 एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टाइप एज वेल. The third type of IELTS writing essay is IELTS advantage and disadvantage essay. इसका 2 सब टाइप भी होता है. सब टाइप 1 को पहले डिस्कस करेंगे, then we'll move to sub type 2. Sub type 1 is advantage and disadvantage essay. It's quite similar to a discussion essay where you are given a statement and must present the positive and negative side of that particular issue जो आपको स्टेटमेंट में बताया होगा. Just like the discussion essay जहाँ पे आपको positive and negative side दोनों बताना होगा, आपको अपना personal opinion भी देना है. Just an example of this subtype is some people think it is good for students to take a gap year before going to university. What are the advantages and disadvantages of doing so? आपको मेन बॉडी पैराग्राफ जो होगा उसमें पैराग्राफ 1 में आपको एडवांटेजेस बताना है एंड पैराग्राफ 2 में आपको डिसएडवांटेजेस बताना है, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड योर एसे. दिस इज सब टाइप 1. नाउ लेट्स मूव टू सब टाइप 2 which is outweigh essay. Outweigh essay is by far the most difficult of the 2 essay categories in this type, but it's one of my favorite. Outweigh essay is super interesting to write. It requires you to present an opinion and explain your opinion as well. तो क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझते हैं. सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल इवेंचुअली हैव ओनली 1 लैंग्वेज. डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग 1 ग्लोबल लैंग्वेज आउटवे द डिसएडवांटेजेस. इधर में आपको एक स्टेटमेंट दिया है. सम पीपल थिंक द वर्ल्ड विल इवेंचुअली हैव 1 लैंग्वेज इज द स्टेटमेंट, एंड देन दे आर आस्किंग डू यू थिंक द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग 1 ग्लोबल लैंग्वेज आउटवेज द डिसएडवांटेजेस. आपको एक अपना ओपिनियन देना है. फर्स्टली, येस आई थिंक दैट हैविंग 1 लैंग्वेज इज बेनिफिशियल. दिस इज योर ओपिनियन. नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन why you're saying that particular line.
आपको क्यों लगता है कि वो बेनिफिशियल है, आपको एडवांटेजेस बताना है एंड यू हैव टू कंप्लीटली एक्सप्लेन व्हाई द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग वन ग्लोबल लैंग्वेज आउटवेज द डिसएडवांटेजेस। या फिर अगर आप कॉन्ट्रास्ट में बोलते हो कि नो आई डोंट थिंक दैट हैविंग वन लैंग्वेज इज यूजफुल और बेनिफिशियल और इट कैन हार्म द सोसाइटी इन द लॉन्ग टर्म, ये आपका नेगेटिव ओपिनियन हुआ। फिर आपको नेगेटिव ओपिनियन भी एक्सप्लेन करना है, यू हैव टू शो व्हाई द डिसएडवांटेजेस आउटवेज द एडवांटेजेस। द फोर्थ टाइप ऑफ IELTS essay is IELTS solution essay. This is not as much as popular as the first three categories जो मैंने इस वीडियो पे एक्सप्लेन किया, that is IELTS opinion essay, IELTS discussion essay and IELTS advantage disadvantage essay. Those were the most popular types and वही एग्जाम में मोस्टली आते हैं। But this one and the next one, like आपको बहुत सारे कैटेगरीज आपको जानना होगा because you never know what exactly can come in your exam, right? So knowing all the categories super important. 3 पॉपुलर तो मैंने बता दिया है, these two are unpopular but it's important. IELTS solution essay, इसका बेसिकली 3 सब टाइप होता है। सब टाइप 1 is solution 1, solution only questions. Solution only questions is the subtype 1. Example से समझेंगे, some children have serious weight problems, what are the possible solutions? इसमें आपको बस एक स्टेटमेंट दिया गया है, some children have serious weight problems, what are the possible solutions? आपको बस सोल्यूशन के बारे में मेन बॉडी पैराग्राफ फ्रेम करना है, लिखना है, and then you have to directly conclude your essay. सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना इसको, they are just asking for the solutions. Moving on to the second category, second sub category of this particular IELTS solution essay, that is cause solution questions. Cause solution questions का एक एग्जाम्पल समझेंगे, children in rural areas are being left behind in their academic development. Why is this the case? What solutions can you suggest? तो इसमें आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि children in rural areas are being left behind in their academic development. Why is this the case? आपको cause of the problem बताना कि इस प्रॉब्लम का जड़ क्या है, कहाँ से इसका occurrence हो रहा है। तो आपको cause पहले डिस्कस करना है मेन बॉडी पैराग्राफ में, then you have to provide solutions or suggest solutions that can solve this particular cause, solve this particular problem. Okay? So आपको cause भी बताना है, solution भी बताना है। Moving on to the third problem, थर्ड सब कैटेगरी आई मीन, दैट इज प्रॉब्लम सोल्यूशन। प्रॉब्लम भी बताना है, सोल्यूशन भी बताना है। एग्जाम्पल से समझेंगे, मोर एंड मोर पीपल आर मूविंग टू सिटीज टू लुक फॉर वर्क, what problems does this cause, what are the possible solutions? आपको स्टेटमेंट दिया गया है एंड आपसे प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ रहे हैं कि what are the possible problems that this causes and what are the possible solutions? आपको मेन बॉडी पैराग्राफ को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको प्रॉब्लम्स के बारे में बताना है एंड सेकंड पैराग्राफ में आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताना है। दिस वाज ऑल अबाउट IELTS सॉल्यूशन ऐसे 3 सब टाइप है, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कॉज सॉल्यूशन एंड जस्ट सॉल्यूशन। इट्स ईजी, डू नॉट मेक इट कॉम्प्लेक्स एंड डू नॉट ओवरथिंक अबाउट इट। क्वेश्चन आएगा, समझोगे पैटर्न एंड लिख लोगे, दैट्स इट। The final type of IELTS writing task 2 essay is direct questions essays. Some teachers also call it as 2 question essays. इसका 3 category of questions आता है, सारे category को समझेंगे with examples. The first category is pollution around the world is becoming a serious problem. Do you think this is a problem that should be solved internationally or on a local level? इसमें क्या है, हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, is a single statement that is pollution around the world is becoming a serious problem and there is just one follow up question. This is the category 1. एक statement होगा, एक ही question होगा. Moving on to the second category, which is some people spend a lot of money on weddings. Why do they do this? Do you think it is good to spend a lot of money on weddings? इसमें क्या है, एक statement है, some people spend a lot of money on weddings and 2 follow up क्वेश्चन है। दिस इज द कैटेगरी नंबर 2 एंड दिस इज द मोस्ट पॉपुलर। अगर ये कैटेगरी ऑफ ऐसे आता है देन यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा अलॉन्ग विद अ स्टेटमेंट। एंड द थर्ड कैटेगरी इज 1 स्टेटमेंट एंड 3 क्वेश्चंस, व्हिच इज वेरी रेयर, बट जान लो, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। न्यूज एडिटर्स डिसाइड व्हाट टू प्रिंट इन न्यूज़पेपर्स एंड व्हाट टू ब्रॉडकास्ट ऑन टीवी. What factors do you think influence these decisions? Do we become used to bad news? And number 3rd question is, would it be better if news was reported? ठीक है, 3 क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट. दिस इज अ रेयर कैटेगरी, बट दीज आर द मेन सब टाइप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डायरेक्ट क्वेश्चन टाइप ऑफ ऐसे. अगर आता है तो इन तीनों में से आएगा. मोस्टली द सेकंड टाइप विल कम 2 क्वेश्चंस फॉलोड बाय 1 सिंगल स्टेटमेंट. सो अगर आता है, अगर 3 वाला भी आता है, नथिंग टू वरी अबाउट इट. इट्स नॉट कॉम्प्लेक्स, जस्ट आपका मेन बॉडी पैराग्राफ और लेंदी होगा एंड यू हैव टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स वर्ड्स. वोकैबुलरी के बारे में अगर जानना है तो IELTS राइटिंग का जो मेरा वोकैब का वीडियो स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, वो वाला चेकआउट कर लो, या वोकैबुलरी विल बी गुड टू गो. दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप. सो दिस वाज ऑल अबाउट IELTS राइटिंग टास्क 2 टाइप्स ऑफ एसेज. मैंने सभी टाइप को कवर अप कर दिया है. देयर इज नथिंग लेफ्ट, जस्ट 5 ही टाइप है एंड यू नाउ नो हाउ टू एग्जैक्टली डील विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. एंड अगर फॉर्मेट जानना है कि कौन से टाइप का ऐसे कैसा होता है, इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट फॉर्मेट, एग्जैक्ट सीक्वेंस, देन उसके बारे में मेरा वीडियो आने वाला है जल्दी. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम ट्राइंग टू कवर अप द एग्जैक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट will come in task 1 academic. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो because IELTS सीरीज इज गोइंग ऑन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो एवरीथिंग. हाफ नॉलेज इज वेरी हार्मफुल. तो पूरा सीरीज देखना है, बी गेटिंग 8.5 बैंड सुपर इजीली. ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो. वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो. मिलता है अगले वीडियो में. टिल देन स्टे ऑसम, स्टे सेक्सी. तनिकेत त्साहा साइनिंग ऑफ फॉर द डे. बाय बाय.